उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, वीडियोग्राफ होने के बाद फिर उस दिन फिर ये प्रोसेस, सेक्टर मजिस्ट्रेट सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में वीडियोग्राफ होने के बाद पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, जो आपको नंबर दिया, फिर कैंडिडेट के नंबर भी सबसे शेयर किए, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो, मशीन इस बूथ पे जाएगी, जो आपको नंबर दिया, फिर जब उसके नंबर भी सबसे शेयर तो कहें भाई मिला लो आप, इस नंबर की है कि इस बूथ पे जाएगी, वोट भी डाल के देख लो 50, फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो, 50 डाले किसी ने, उसी नंबर की है कि नहीं हमें ठीक है, वोट भी डाल के देख लो 50, किसी स्टेज में ठीक है, किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट डाले, किसी ने 5 कैंडिडेट, किसी ने कहा नहीं 5 ने कम वोट डाले, किसी ने स्टेज में उसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, पूरे दिन वोटिंग कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, फिर बंद बैटरी उसी हिसाब से, बंद होने के समय में एंड ऑफ, फिर पूरे दिन वोटिंग पोल में फिर से दस्तखत कराए, तब एक वोट का हिसाब, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट, बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत, कौन दिखाता है इतना बताइए, कोई एक से हिसाब लगाया, कंपैरेटिव बताइए, फिर से फॉर्म 17 सी दिया, जहां पब्लिक डिस्क्लोजर, कौन दिखाता है बताइए, कोई एक पार्टिसिपेशन, कंपैरेटिव बताइए पूरी, इतना अधिक हो, जहां ये बताइए पब्लिक डिस्क्लोजर के बाद में बंद करने के बाद में उसको पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, स्ट्रॉन्ग ये बताइए प्रोसेस, फिर काउंटिंग के समय निकाला, बंद करने के बाद में लगाई, उसको बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग कैसे होगा, वो नंबर हमने बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे, चेक कर लो, फिर 17 मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग, जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें चेक कर लो, 17 से चेक कर लो, for round wise round this is happening, objecting to and any of the issue, there is a provision relating to this at any stage which is not objecting to, so any of the individual relating to this at any stage है, बिल्कुल रोबस्ट है, अच्छा और मैं बताता हूँ आपको, so आप पिछले 15-20 इलेक्शन जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है, रिजल्ट्स ऑफ द रिजल्ट्स डिफरेंटली, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंट भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, जहां एनीवे हम ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी वेबसाइट पे डलवाएंगे, एनीवे हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे, आप जवाब दे देंगे, आपको एक एफएक्यू भी डलवाएंगे, बताता हूं मैं आपको, बट जवाब दे देंगे आपको, एक एफएक्यू भी बनाएंगे, पूछ लीजिए, अभी ये बता देता हूं जी, बताता हूँ आपको, ये भी इसी के साथ, बट इसमें ये बता दे, इसके साथ ही बता दे, ये भी इसी के साथ बता, जैसे मैंने पहले बताया, नहीं ये प्रभु जी का, इसके एक सिंगल यूज बैटरी है, जैसे मैंने पहले बताया, हर जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 एक के लिए सिंगल यूज बैटरी है, इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी तो 5-6-7 दिन के लिए, इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरीथिंग चार्ज होगी, इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में कैलकुलेटर बैटरी 5 साल तक चलती है, इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी, जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी 5 साल तक चलती रही, यूज डिसयूज, जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% सबसे यूज होती रहेगी 10 साल, वो धीरे धीरे यूज, 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद होता है, 5 साल ने प्रोविजन बनाया हुआ है, 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा सडनली, तो इसकी दो चीजें, एक प्रोविजन बनाया परसेंटेज ऑफ चार्ज, जब इनिशियल ये शुरू होगी, आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ, इसकी दो चीजें हुई, एक इट्स अ वेरी लो ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड वोल्टेज आउटपुट व्हिच द मशीन इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, सो एनीथिंग वेरी लो 7.5 रिक्वायर्ड वोल्टेज वोल्ट इज कंसीडर्ड व्हिच द मशीन बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है, सो एनीथिंग बिटवीन 7.5 इनिशियली 4 to 8 वोल्ट इज कंसीडर्ड कि बिल्कुल मार्क्ड एज दैट यस इट इज ओके, गो अहेड, 99% इनिशियली मार्क्ड एज दैट यस, कमीशनिंग के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, नाउ पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल, आफ्टर कमीशनिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स समय अलग अलग है, मॉक पोल की जरूरत है, सो ये पोलिंग स्टेशन में भी मॉक डिफर डिफरेंटली, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है, 7.4 से नीचे, सो ये एवरीथिंग कैन तभी डिफर डिफरेंटली, एक्चुअल और दिखाना शुरू वोल्टेज 7.4 से डिजाइन आएगी तभी, अगर एक्चुअल वो दिखाना शुरू करती है 4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.4 एंड अगर 5.8 जब 5.8 पर आएगी कोई परसेंटेज तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के, जिससे कि टेक्निकल लोग बंद होने एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, दिस इज व्हाट इट इज, बट एक बिल्कुल डिटेल फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, इसको एफएक्यू में डालेंगे,
हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने एफएक्यू में डालेंगे और जो पार्टीज ने जो भी उनका हम बहुत इज्जत के साथ सम्मान के साथ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज ने जैसे आरओज अपना अपना जवाब बहुत इज्जत के साथ वी हैव आस्क्ड ऑल आरओज पूरा जवाब देंगे 20 और जैसे जैसे आरओज अपना अपना जवाब दे देंगे सब बताइए वी आस्क्ड ऑल आरओज सब बताइए कौन कौन साथ में था, सब डॉक्यूमेंट डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस बताइए कि कब कमीशनिंग हुई और बनाने के बाद कौन कौन साथ में था, माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए, पूरी प्रोसेस ड्यूटी इन लोकतंत्र अगर कोई पूछ रहा है और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब देने के बाद कंपाइल कीजिए ड्यूटी इन लोकतंत्र अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब देंगे, इसको हम उसका जवाब देंगे. Thank you. We will take one question from sir, media friend from Maharashtra also with us, sir. Gentleman in the third row, please. Yeah. Few more last round. We will take one question from sir, media friend from Maharashtra also with us, sir. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम की न्यूज. एक चीज और बता दूं, एक चीज और. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम की न्यूज. एक चीज और बता दूं, जो चीज और इसमें मैं आपको प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं. एक हमारा CNB का लगता है कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो माइक्रो कोई भी प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं. रिक्वेस्ट CNB नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई भी सो एनी रिक्वेस्ट CNB की आई है. स्पेसिफिक रिप्लाईज ऑफ ऑल दिस. यस कोई. हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम न्यूज चैनल से हूँ. मेरा सवाल जो है वो सिंबल को. हाँ सर, मेरा नाम महाराष्ट्र में एनसीपी के सकाल मीडिया ग्रुप के शाम न्यूज चैनल तुतारी और ट्रम्पेट सवाल जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया ज्यादा, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है ज्यादा फ्रीज करना चाहिए. महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए. महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है. आप फ्रीज किया है एसओपी बनाने वाले अभी तक सिंबल अभी कोई डिसीजन नहीं लिया. तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपी बनाने वाले हो वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं. उसके का राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूँ. सर, मेरा एक सवाल आपसे है. मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी और विधानसभा चुनाव हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ था. हिजाब को लेकर ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से शगुन पर हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ. हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर आइडेंटिटी को लेकर इस तरह से देखना चाहते, जिसको लेकर विवाद हुआ था. दिल्ली बीजेपी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर आइडेंटिटी को एसओपी बनाई जाए, देखना चाहती है, इसको लेकर क्लियर हो सके विवाद हुआ. मेरा सवाल आपसे बीजेपी आपको डेमोक्रेसी को लेकर या कल्चरल राइट एसओपी बनाया गया जिसमें आइडेंटिटी क्लियर हो सके, तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट आप किसको आगे रखेंगे? सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके we will go by this. राजीव सर, अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जो आप पर नहीं ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया. बशीरहाट यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी. बशीरहाट is under the election petition. There is an election Milkipur also is under election. So that is one case. So let me say it that way. जहाँ election petition नहीं है, Milkipur also is under election. So let me say it that way. तो दे देंगे. जहाँ election petition नहीं है, वहाँ सब में हो रहा है. Let us ask. Let us go orderly. Yeah, please follow us. दो तो मैंने बताई दी आपको. One gentleman in the let us go orderly. Yeah, please follow us, system. Thank you. Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So what are the steps? My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So what are the steps? Election अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, सर महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, बड़े शहर में जिस तरीके से इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार लेकर किस तरीके से चुनाव में इससे पहले इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं शहरी इलाकों इसको लेकर किस तरीके से चुनाव में इससे पहले हमने बैठक की थी, बांद्रा का इलाका तैयारी की जा रही है ताकि कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं ताकि बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग. We will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions. We will take one more question, sir. Let him answer. About this symbol. Let him answer. First question is about let him answer. Let me answer these questions first.
अबाउट दिस सिंबल, एनसीपी का जो फर्स्ट सिंबल है अबाउट दिस सिंबल ऑफ द मैन ब्लोइंग तुरी, एनसीपी का जो सिंबल है उसमें हमारे पास में दो रिक्वेस्ट आई थी तुरी, एनसीपी एसपी से, उसमें हमारे पास में दो रिक्वेस्ट तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है एसपी से तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशन तो ये आई थी कि स्वीकृति दें, उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि उनको तो उन्हें हम जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है वो, और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि मशीन के जो उनका सिंबल है वो छोटा दिखाई प्रोमिनेंट नहीं है तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, और दूसरी रिक्वेस्ट और भी साथ करती है कि जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए, ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। सो पहली रिक्वेस्ट और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली, सब्जेक्ट टू हमने डिस्क्लोजर दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं। हमने उनको लिखित में ये भी डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी कि आप खुद हमें बताइए, सेकंडली कि आप अपने हमने उनको लिखित में ये भी किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे, आप खुद हमें बताइए। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे को मैन ब्लोइंग जो उनकी पहली तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। सो इस इलेक्शन में उनका कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे, एक दो ज्यादा दिखाई देगा जो उनकी प्रोमिनेंटली दिखाने माना। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल ट्रम्पेट है इस टाइप की, ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली थोड़ा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप नहीं करता है जो कि ऑल दी मैन ब्लोइंग थोड़ा से बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज वन। कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब ऑल एआई एंड डीप फेक्स एक्सेप्टेड, दिस इज अ वेरी कंटेक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज डिस्टर्बिंग all the AI and deep fakes. I have said this is a very contextual question, very serious issue. This is disturbing. हमने इसके लिए दो इलेक्शन किए और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, हमने इसके लिए दो तीन चीजें करना है, और आपने अगर पाने में 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी, पाने में सक्षम हुए थे, पॉसिबल एआई रिलेटेड किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी, इस तरीके we were able to control एआई रिलेटेड थ्रू nuances, control rooms which have been set up, we were able to control it, which have been set up in all the districts. All the districts. Control rooms which have been set up, police headquarters, teams which have been set up in all monitor continuously all the anything which is fake, and in police headquarters take corrective action to monitor continuously. This is anything which is fake. In some cases, take down and take some corrective action. And in some cases, even this is lack to wherever it was. In some cases, कुछ लोग हैं, some cases अभी भी, and in some cases even criminal action wherever it was. एकदम झूठ नैरेटिव कुछ लोग हैं किसी न किसी तरीके से चलाते हैं, अभी भी हम एकदम झूठ नैरेटिव अभी तक हमने कुछ नहीं किसी न किसी तरीके से चलाते हैं, हमने उसको हम ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद को देख देख के समझ जाएंगे कि कुछ नहीं किया है, इसलिए हमने उसको वी आर गोइंग ये सोच के रखा हुआ है कि बट इट हैज नॉट क्रॉस देख के समझ जाएंगे रेड लाइन, द डेट क्रॉसेस रेड लाइन, दे विल आल्सो बी वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द आइडेंटिटी रेड लाइन, द डेट क्रॉसेस रेड लाइन, दे विल आल्सो वर्सेस कल्चरल आइडेंटिटी, identity democratic has identification versus conduct of election rules identity, section 35 this has rule 35 is conduct of election rules mentions about section the identification of electors, rule 35 also specifically mentions about facilities for the identification of electors, exactly also 34 mentions about facilities for women identification का कार्य exactly रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी प्रोविजंस के तहत, बट विद फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू, जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद एंटायर फुल रिगार्ड प्रिवेलेंट इन मेनी स्टेट्स टू, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many parts of the country, which are prevalent in many states according to the rule position, which are prevalent in Rajasthan, also which are prevalent in many parts of the country, fullest possible respect to the according to the rule milieu of that particular area, also the violence in fullest possible respect to the cultural milieu of that particular area. After the violence in elections, we will make it extremely clear. After the MCC declaration, police authorities, states, we will make it extremely in a particular state clear. Which you are mentioning to the that police authorities, state civil violence of any kind in a particular state, and the crime of this nature which has a political overtones
violence of any kind a no-go and the crime of this nature which has a political overtones उनको सख्त हिदायत हम immediately ये पहले से सोच के बैठे हैं for the commission जैसे ही हम ये अभी तक हमारा रोल नहीं था सख्त हिदायत हम immediately ये पहले से सोच के बैठे हैं we will have जैसे ही हम अभी तक हमारा रोल नहीं था we will direct everyone जैसे ही किसी भी तरीके की violence किसी भी तरीके का crime especially against any political person we will direct everyone should not किसी भी तरीके की violence we have not allowed it to happen in especially Haryana J&K state after should not happen should not we are sure that it will not happen we have not allowed it to happen thank you sir for the comprehensive briefing thank you friends for joining us today there's a high tea outside please join us thank you sir for the comprehensive briefing we have shared all the details along with the presentation and press note high tea outside media join in their WhatsApp group they will also be uploaded on our website all the details along with the presentation and press note with our media friends in their WhatsApp group they will also be uploaded on our website thank you So use randomness to your advantage. The more random things you do, the more possibilities of random things happen. No, some paper, some note. Randomly. Yes. Document is given from the other side, or this case law is useless. No, there are lawyers who do that. Fraud. That's right. Yes. Random people saw me. ठीक बोल रहे अंग्रेजी ठीक बोल रहे थे और टाइप Does it matter अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है इंसान because you are somebody who went independent quite soon yeah young and dumb that's how you like to put it. Hello and welcome to another episode of Law Varta's litigation series. Today we have Utkarsh Joshi, who is almost 10 years into the profession now. He's my senior from law school. And today we'll talk about district court practice more than other kinds of practice. And this is a new sort of venture that this podcast is going into. We want to keep talking to more and more litigators who also go to the district courts to give you a sense of what district court practice is like. Thank you very much, Utkarsh, for joining us. Thank you for having me over. I think I'm slightly nervous. I'm generally not, on social media. Yeah, on the general, but Instagram, etc. I'm not on any of them. So, but you're not on LinkedIn. You're not on. I'm not on LinkedIn. Facebook, Instagram. Anything. Facebook has, because I do some IP laws, so we have to check infringement whether. For your clients. Third parties are doing it. Often people put their things up on Facebook because the value of a brand is in advertising it. So Facebook is often the first port of call. And I hear Instagram is also, but I have never started down that road yet. Okay. So maybe at some point. Any reason? There are multiple reasons. The short point being it has an information and sensory overload, which I feel 99% of it is noise. So there's a difference between noise and information. So we have got, for example, listening devices listening out into space. And you must have heard of things such as the wow signal, jo kabhi 1970s mein kabhi aaya tha, stuff like that. So the point is, you're constantly receiving information, but it's like static. Merely because you receive information does not mean it has value. Yeah. So you have to differentiate between noise and signal. Of course, there could be actual signal or actual valuable information on social media, but to get to that, the amount of noise one will have to go through is perhaps not worth it. Yeah. And well, that's like one of the reasons it's not worth it usually. Social media pe aise cheezein, what can one say? Yeah. So the academic reason perhaps is that. I got it. To put it that way. And Utkarsh, are you a first generation lawyer? I am a first gen lawyer. And what's your family like? Where were you from? My mother was so I was born in Bombay. My mother was in a PSU. She retired not too long after I graduated. My father was a journalist. He used to work in a newspaper called Brits.
And thereafter, he also, for a while, he was a chief editor of his own newspaper. And he ran that for 15 plus years, I think, based out of Bombay. And now they're both retired and living happily in their own. And generally, so there's water and coffee. Thank you. That was. And which all courts do you go to? By which all courts do you mean? Like where all do you practice? Where all have you practiced and where all do you practice? So basically, now I do basically commercial litigation. What I used to do was intellectual property rights. I've learned mostly that from some very renowned people, fortunately for me. And there's a lot I learned from them. But basically, I used to do original side in the Delhi High Court when I was with the firm long while back. But Delhi High Court, mein things go if the value is more than 2 crore. So do you want to just explain for the audience what is original side of the High Court? An original side is where any legal action is where a legal action must start. So for example, if I were to slap you, maybe it is a wrong, but can you go to the Supreme Court with it? You have to start somewhere. Maybe you start with the magistrate's court, like as a very simple example, right? Maybe I'm reducing it. Maybe I'm getting something technically wrong here, but you start with whatever is the lowest court in your jurisdiction. So that would be the original court. So normally in a matter where there are, so if your matter is for, let's say, a recovery, you've given somebody money. Yeah. So between 3 lakh rupees to 2 crore rupees, the original jurisdiction would be a district court in Delhi in the relevant district. Got it. More than 2 crore rupees, it will go to the Delhi High Court. No matter what the kind of the dispute is. So long as under Commercial Courts Act, there are certain defined, Section 2C basically of that Act defines what all qualifies as a commercial dispute. So IP is one of them, which is how I actually got into doing or got familiarized with Commercial Courts Act. And now, obviously, once I left the firm, our clients did not have value, litigation of more than 2 crore. Okay. So most of them was in the district court. And I go a lot to Saket, especially Saket District Court on the southeast side. I go there often. In fact, an interesting thing about original side jurisdiction in India is that there were only 3 courts with original side. The 3 presidency courts, the Bombay High Court, the Madras High Court, Chennai Madras High Court, and the Calcutta High Court. I believe in 1919, if I'm correct, again, I might be getting the facts wrong here, but there was another charter. So these were the chartered high courts. There was another chartered high court created in Lahore for Punjab, which, if I'm correct, had original side. Which must have had original side because the Delhi High Court derives its original jurisdiction from that charter, as does Shimla. So, which is why there are only 5 high courts in India with an original side. So, there are only 5 high courts where you can start a suit. But I don't know about the other high courts, but in Delhi, the minimum pecuniary jurisdiction or the monetary value of jurisdiction to originally come before the high court is more than 2 crore for a commercial matter or for any other matter. For a commercial matter, it's between 3 lakh in the district court to 2 crore. So if you have to recover 1 crore, then you will go to a district court of the relevant jurisdiction. Obviously, depending on the law, there's a lot of law which governs what jurisdiction. So you're going generally to all district courts in Delhi, or some of them, like you mentioned, Saket, but is that the primary? Patiala House, Saket, and Karkaduma are the ones I go most often. Dwarka, not as much because it's a little far away. And Rohini very rarely. I have been because it's really far. Rohini is quite far from where I live. And how about the approximate ones like Gurgaon? Oh yeah, out of Delhi, yes. I go to Gurgaon. I do a lot of RERA matters there. That's in fact, ironically, how I started out. Because when I left the firm, my firm was an IP firm, intellectual property. My firm, the place where I was working. And so I had fallen ill and I was recovering and stuff like that. So while I was just doing nothing and just waiting to recover and maybe, either go back to the firm or apply elsewhere, whatever, things were not clear in my mind. People at that time, RERA had started in Noida. This is 2018, around 2018. The law is 2016. The law is, so it's a central act, but because there's a land element involved, that's why I think the state has to make enabling rules.
And those rules, even after they come, then you have to implement them and actually set up a body and stuff like that. So 2-3 साल लग गए उस पूरे प्रोसेस में. 2018 में ठीक से the entire process. So रेरा में अब ऐसा हुआ कि लोग मुझे देखते तो रहते थे, मैं सोसाइटी में रहता था, वन ऑफ दोस नोएडा की सोसाइटीज में. So लोग देखते थे कि वकील, मतलब people knew me as a lawyer. तो लोग people knew me as an intellectual property lawyer. Maybe the translation didn't go through because some people started assuming I'm a property lawyer. And because you are basically sitting empty, so you're like, all right, मैं property lawyer भी हूँ. And basically property law सब रेरा आ गया था. So I read the entire act, like एक matter में, I think मैंने 2-3 हज़ार रुपए के लिए full matter, I don't remember. It was clearly not financially rewarding. It was just to do something. Correct. Right? And I took that up, and I remember I read the entire RERA Act. I searched for the landmark judgments. I read the landmark judgment. I made a written submission, written note, and then I went to like UP RERA. And I realized that, maybe I had over-prepared a bit. Right? And then वैसे ही फिर धीरे-धीरे करके like random people saw me कि अच्छा आप ठीक बोल रहे, अंग्रेजी ठीक बोल रहे थे और type. So I see randomly people reached out, and one thing led to another, and well, here we are. Does it matter अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है इंसान? I ask because when I ask this to people who primarily do appellate court work, there the answer is very clear. It matters, like 90% of it is that, because if you can't do it, the reason they say it is because if you can't do it, you're almost ineligible to appear in most of these courts. That's what they say. I don't think district court mein I don't think, at least for now, I don't think that's an issue. In fact, no, not at all. I don't think that's an issue. और मैं commercial side की बात कर रहा हूँ. By the way, when I say district court, I mostly practice in the commercial courts on the district court. There's an entire world of criminal law magistrates that are out there where, I mean, even to say I'm not, at the end ये law podcast है, यहाँ lawyers आएंगे, तो I am not qualified to say anything, because मेरे से कई ज़्यादा educated और वो सब लोग हैं जो उस फील्ड में बता सकते हैं. But yes, commercial law in district courts, yes, I do that regularly, and there I can tell other people कि भाई आप मत बोलो, मुझे पता है कि क्या हो रहा है. तो उसमें आप कह रहे हो कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंग्लिश ना भी, if you're not totally fluent in English, even then आप हिंदी में करो आर्ग्यू, पूरा हिंदी में करो, आप सेंस में करना चाहिए. और देखो आजकल हो गया है कि यार इंग्लिश हो ही जाता है, और बेसिक आप सेक्शन पढ़ोगे उसमें इंग्लिश आ ही जाएगी. तो आई डोंट थिंक एक्सेंट, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल से इंग्लिश में अच्छा नहीं है, 5 साल लॉ पढ़ा है तो उसको इंग्लिश तो आती है, उसका एक्सेंट नहीं है. I don't think accent matters. Personally, to me, accent does not matter at all, right? Or I like to think so. I don't know. मतलब, who knows? Some accent I might go like, oh, I don't like this guy. But generally, I don't think accent matters. That's my, at least in the district courts, generally. Unless I have not met any such specific judge who's को कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है. That I haven't yet met. And I don't think so. What I gather is district courts में even on the commercial side, it's not like judges are insisting कि भाई language of insistent is cannot, no, insisting is not the right term. Like no judge has ever gone कि हिंदी में कैसे बोल दिया. Because I've seen this happen in both High Court and Supreme Court. I don't think all judges do it. In both of these appellate courts also, of course, you've also seen कि काफी judges हिंदी में lapse हो जाता है. हाँ, और judges accommodative होते हैं, ऐसे नहीं कि पीछे पड़े हैं, लेकिन कभी-कभी some judges will make this comment. The language of the court is English. Why you talk? It's good to see that district courts are not necessarily doing it, because cuts out a whole body of lawyers who are so bright, but जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलते हुए बड़े हुए हैं. एक्सेंट का स्ट्रेस मत रखो, बट यार एट द एंड हमारा गेम कम्युनिकेशन का, तो अगर आपको समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम. हाँ, राइट. पता वो समझ गए आप, लेकिन आपका एक्सेंट टूटा हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो आई एम सेइंग एक्सेंट डज नॉट मैटर, बट एट द एंड इट्स अ कम्युनिकेशन थिंग. इफ यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर, देन तो इट्स अ then how did you do your law? That's my first question. So and why did you end up litigating? It's a bit it's a loaded question, but कैसे decide कैसे किया? By elimination decide हो गया, या कुछ मजा आ रहा था? Litigation, internships. See, I love that you asked internships. In my 5 years of law school, and this is obviously not supposed to be advice. Okay. Right? In my 5 years of law school, I think I didn't do a single legal internship.
I don't think I did a proper internship also, but I'll just tell you the internships I did. You can decide if they qualify as internships. Okay. So in my first break, in the first semester ke break, we were all obviously ab to intern karenge. Yeah. So I'm from Bombay. I went back there, and hame library internship karni thi tab. And see, I don't know anyone in law. We are so far away from that world, like law itself. Ye sab cheezon se dur rehna hai type of a thing. That who do you even approach for things like this? Who do you ask? Like, what are you supposed to email as a first semester? Like, what is even the process of that? Like, email pe kya likhna? Correct. Right? So, I applied the library internship thing. So, we'll do it as per college. So, I applied to the University of Mumbai Library. And, I must thank that internship for one thing. There's a weird feeling I get. I cannot describe it. I don't know if there's a word for it. But the University of Mumbai Library must be, I think, 100 years plus old or something around that. It's like a very old British kind of a building. And it used to work at that time, I'm talking about 2010, with index cards. So literally, people may not know this abhi, but I actually learned all this. वो index card से तुम search करते हो, हर book के पीछे library sciences में code होता है. तो I'm forgetting different क्या होता है, Constitution law का एक कोड होता है, हर चीज़ का अलग कोड होता है. तो आप इंडेक्स, तो जैसे आपको कोड 34 में ढूंढना है, तो 34 में जाके तुम सेक्शन में देखोगे, एंड देन यू टेक आउट इंडेक्स कार्ड, चेक करोगे, उसमें टाइटल होगा, वो इंडेक्स कार्ड को फिर तुम कॉपी करोगे, यू कीप द इंडेक्स कार्ड बैक, कॉपी दैट, एंड यू गिव इट टू द one of the librarians जो the counter पे बैठे हैं, they will take it back to whatever some guy who will then know by that book इसको कौन सी book चाहिए, and वहाँ से लेके जाके, so I was allowed to actually go back into where all the books are stored. Got it. And like they were like it was like a corridor, I don't know, like there were just corridors and like I think 4 floors full of like unlimited, like you cannot imagine. And of course I know that there are many more books than that, and Amazon पे से ज़्यादा है, but एक होता है, it's like knowing कि कोई billionaire है and actually देखना कि 1 billion क्या होता है, right? तो like damn, इतने सारे books, and I used to just sometimes sit and उसको उधर ही अंदर not do any internship anyway, करना क्या था library में, यही था कि book लेके आ जाना, कोई बोलेगा तो, and they didn't trust us with all that also. Yeah. So basically I was just sitting, and I used to read quite a bit, and I used to go home early and play football with my friends on the beach. Yeah. So that was one internship I did. Then I tried for another, which basically was a month-long internship, which I reduced to a 20-day one, of which I attended 10 days. I didn't really learn anything. Where was this? Right, Bombay, only in a law firm. Okay. मैं क्या बोलूँ, law firm का भी क्या नाम लूँ, it's still a good वो, but हुआ क्या कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, क्या बोले? Litigation or like a litigation नहीं था, I guess corporate था, because मैंने कुछ किया ही नहीं ना. वो उससे पूछो, तो आप firm में हो सकता है आपको काम पे भेजा, आप turn up ही नहीं होते, तो फिर अब क्या है ना, क्या कर रहे थे आप exactly? हमें भी श्योर नहीं है कि क्या करके आए. And एक मैंने की जो सबसे productive internship in that sense was I interned with the Hindu business line. Like randomly, I worked with a newspaper, and my father was a journalist, so even though it didn't help me getting the internship, I think they were themselves surprised. Why is a lawyer interning with us? So for novelty value, आओ तुम बैठो देखो क्या होता है. So, but I made very good friends, and not only that, I learned. You see a different life. As a journalist is a different view of the world from, let's say, a technocrat or a lawyer or etc. And the entire thing is different. Like you can actually see कि वो जो बंदा आपके सामने बैठ के जो लिख रहा है वो न्यूज़पेपर में आने वाला है, उसका एक अलग वो है. So that summarizes my internship history. So then, why litigation? How litigation? So what happened was that one thing I was very clear on is that I didn't want to do this UPSC games or this government exam games, because some things like I tell many people that there is a reality out there, whether you believe it or not, right? And so one of the things about reality is that age of early 20s, etc., is where I feel that, if I gave you free time to explore yourself, most people would just waste time. Just, watch latest TV shows and do some time pass, And I just wanted to make sure that I'm working 16, like somebody is harassing me. Like, it's like being on a pan under with a fire under it. Yeah. You don't want to be 22, 23 and comfortable.
that was my viewpoint. I don't know if that is correct or not, but that's how I viewed it. So I actually got placed with a power distribution company from law school because I was very clear. I hadn't done a single internship, right? But that didn't mean I was sitting empty. You will remember in college I was reading. Ironically, पूरे college में law तो पढ़ा मैंने इतना मतलब उतना ही जितना पेपर निकल जाए. And the biggest irony is कि ना मैंने कोई moot court ऐसे कुछ खास किया, कोई research paper नहीं लिखा, कोई debate नहीं की. But I like to think that the time in law school was super productive because I actually took time apart to read. And many of those things, you can't do it. Like now I cannot do it because just simply because life में इतना कुछ हो रहा है. And at that time, it was like 5 साल का chill करो. And fortunately, some of that 5 साल I utilized to read. And I would suggest to everyone, please read well. Reading well is super important because at the end, it's all, like I was telling you, like imagine like something like Uber, right? It's such a simple concept. But, everybody has a phone, everybody has GPS, a cab banao, lag jayega. And now it's so simple, right? When somebody tells you, and there are such million simple ideas out there. But you just don't see the world as it is. There's a reality out there. Like imagine how, the Google guys see the world. I mean, I can't even imagine. What is it like? What do they see? Information kaisa hai? When they have petabytes of information flowing through. So, yeah. So anyway, where were we? I think I was asking why litigation when you said you... So I said I got placed there and it was I could go for a 4-hour lunch and nobody would care. Got it. But this was a college placement? It was a college placement because what happened was now in hindsight, I put my colleagues in a very difficult spot because I hadn't done a single internship. And ours was the 3rd batch of law schools, so reputation bhi rakhni thi. Ab to अच्छी है बुरी है पता नहीं, but है reputation and अच्छी है मेरे eyes में. But yeah, so basically I had enrolled for the recruitment committee and now these guys had to get me placed. But here's a guy who's not done a single internship and he's not even sitting for firms and all. So I'm not sitting on any of the firms that came. I had never done a single internship. I didn't even know what do you mean एक firm क्या होता है. Like what do you mean like basics क्या होते हैं ना? एक होता है law होना. So it's like the difference between like the power distribution company that I joined, right? So they took in a lot of people and many people from NIT, proper electrical engineers, etc. And lawyers to kam hi the. So, and basically power distribution company needs a lot more electrical engineers than lawyers. And मुझे अभी भी याद है हमारा एक residential जो area था उस पे lights out हो गई. Okay. तो ये सब highly qualified engineers हैं देश के, मतलब NITs are also very good colleges. And light off हो गई तो I thought these guys would swing into action कि भाई ऐसा पड़ा है अभी हमारे घर पे बिजली चलेगा, हम करते हैं इसको ठीक. बट वो कॉल जाता है लाइनमैन को जो ITI ग्रेजुएट है वो क्या उसको पता है क्या वो सब करना है. सो एटलीस्ट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक तो काम था और सेकंड बात ये थी कि डू आई वांट टू स्टे इन अ प्लेस जहाँ मेरा काम मेन नहीं है एंड जहाँ मेरा काम बहुत रिलैक्स्ड है और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं उनको ना वो अभी एकेडमिक ट्रेनिंग से आए हैं और उनको कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है जो यहाँ सीख सकते हैं. बट मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे पास सैटरडे संडे ऑफ है, 6 बजे ऑफ हो जाता है. सो एट दिस एज व्हेन आई एम 20s शुड आई बी इन अ प्लेस वेयर कोई ऑल दिस विल कम इन हेल्प लेटर. कुछ ना कुछ तो आप काम कर लोगे अगर आप 15-16 घंटे किसी के काम आ रहे हो. सो आई लेफ्ट इमीडिएटली. आई वेंट टू बॉम्बे and there I was very lucky. The person I started working in hindsight, right, that he's also doing very well, and I joined him and I learned quite a bit. But he was also a little bit tired as he was a counsel and he didn't have a drafting office. I mean, he could draft, but he had deliberately chosen to start a counsel office. So now, and I didn't know anything of drafting. Like I didn't know D का starting का board drafting. Like when you say बना दो, what does that even mean? So मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला प्रॉब्लम कि